أيوني خاص يمي كيل تين كلايمينج يلوب كيل أيوني أيا كيل إنسانات كلايمينج كوم دو تو باور فقط كيل كريدا أصل كيل مقابلة حياة. I know K2 is a very great mountain, very hard, but we have to be strong. I think the sense of achievement when you reach the summit, that feeling of walking to the summit, the final 30-40 meters, is just something that will live in my soul forever. वजन आते हैं ना 25 केजी उठाते हैं ना वो पसीना आते हैं ना. I try to live my dreams and mountains for me it's a big passion. कोई इंसान बोला अच्छा बंदा हो गया तो 22, 24, 25 चढ़ाते ना. खराब वाला बंदे ने 30-35 केजी चढ़ाते. K2 is a very beautiful mountain. The first moment you see this mountain, you fell in love with this mountain. I still can't believe I have done. It's so unreal, really. हाइट ज़्यादा है इसलिए पोटोलू एक दो मर गया. ما شغيل دعم سلال الغنو لغلاسا يا هميشا غوتروتا سدوغي غوتروتا سمادونا يا لدنو يا دراشس الغنو गोतरुता से मदुना या लदुनिया. हर साल आते हैं ना और कोई मजदूरी नहीं है ना मजबूर आते हैं ना इधर जगह नहीं है ये आने की. बड़ी मुश्किल काम है ना. 60 साल 70 साल से मरते हैं तो इसका 20 साल 40 साल में मरते हैं ये बोझ की वजह से. साल में अखराजात यही 3 महीने में आते हैं और बाकी कोई हमारे लिए ज़रिया है नहीं है ना. गरीब पोटोड़ों को जो है ना 25 केजी उठाते हैं. फिर उसके अलावा इस कोई जनरेटर है बोर जनरेटर आता है 35 होता है कभी कोई 40 होता है वो चढ़ाते हैं. उसका अलग पेमेंट नहीं होता है सिर्फ 25 केजी का वो पैसा मिलता है. यही तो हमारे ऊपर ज़्यादती है पूरे पोर्टर के ऊपर सिर्फ हमारा नहीं. हम तो शक्ल से इंसान लगता है मगर इंसान नहीं है. मेंबर और बाकी पेमेंट गाइड सरदार साहब को देते हैं. सरदार हमें पोर्टरों को तकसीम करके देते हैं. अस्कोली से कोल्फों 500 कोल्फों से जोला 500 बर्दुमल 3 स्टेज हो गया. बर्दुमल से आके पयू में 4 स्टेज हो गया. पयू से लिलीगो
5 हो गया, लिलिगो से खबुस्ते 6 स्टेज हो गया, रोकस तक 7 स्टेज हो गया। इससे आगे इधर तक 700 रुपया, 700। और 2 9 हो गया, वहाँ से कंकोड़िया बहुत लंबा एक स्टेज है, ग्लेशियर भी है, हेड भी है। क्या कंकड़िया गया तो सर में दर्द होता है, बेस कैंप गया तो उससे ज़्यादा होता है, वापस ही डाउन हो गया थोड़ा कम होता है। ये तो अच्छा लगता है ना सर, खूबसूरत भी है, हेड भी बहुत है, आदमी बहुत खाते हैं। रास्ता नहीं काटा था ना, वो पहाड़ था, उसको इधर से वो गिर गया नीचे दरिया में, फिर दरिया ने इस तरह फेंक दिया। दूसरा साल उसको इधर वो कब्रिस्तान बनाया। For every 4 people who have summited, 1 person has died. 306 people have summited and 81 have lost their lives. Some families have requested that, the climbers climb every mountain in the world, but please don't attempt K2. I think it's the hardest mountain in the world. K2 क्या कहें, माउंटेन का भी बाप है K2 तो। For most people it was snowing on the way down, it was a difficult descent. You know, the next step depends on the last. Half the people die coming down as going up. You do one mistake and you are dead. We perform under the shadow of death. He too refuse women. Many people, because many women after climb K2 maybe were dead. If someone dies on a mountain, I think this is probably better death than one would expect. यहाँ रास्ते पर मर गया तो सारे लोग ने फातिहा मिलेगा, K2 मिल गया तो इतना हाइट पर तो फातिहा भी नहीं मिलते।
दाढ़ी बनाते हैं अपने बीवी को खुशी होते हैं ना। मगर इधर तो नहीं है। हाँ इधर तो बीवी को ख्वाब में देते हैं ना। मिलेगा 4 शादी और करते। हमारा उसमें मुख्तलिफ है सर, कोई एक शादी करते हैं, कोई 2 करते हैं, कोई 3 करते हैं, कोई 7-8 तक भी कर सकते हैं। आप तीनों के मिला के कितने बच्चे हैं? तीनों के मिला के इसका मोहम्मद का 4 हो गया, मेरा 5 हो गया, नज़ीर का 5 हो गया, तो 5 तो 5 10 तो 4 14 हो गया। 14 बच्चे आप। हसन के साथ हो गया। हमारा 6-7 बच्चा हो गया है, वो उसको पढ़ने के लिए अभी 2 पढ़ने के लिए ये है, 6 नहीं है, क्योंकि ये फीस के लिए कुछ नहीं होता है ना सर। किस तरह ये पैसे कमाते हैं इंसानों को पालने के लिए? ये गुजारा करते हैं ना, गुजारा तो नहीं होता है, गुजारा करते हैं बस, सिर्फ रोटी को शाद नहीं करना है और सब शाद। ngana chuta ngana harta wede ngana kyong da to kyang met if you get it मई जून जुलाई अगस्त तक है सर। अगस्त आखिर ग्रुप बंद है ना और मजदूरी नहीं होता, वैसे बैठते हैं बस। इधर बर्फ़ आते हैं बस, इसके नीचे जाते हैं ना उस वक़्त सर्दी में, इसके अंदर बैठते हैं और काम शाम के लिए मजदूरी कुछ नहीं होता है, सिर्फ 4-5 महीने मजदूरी होता है, 6 महीने 7 महीने आराम बैठते हैं बस। मैं हो गया तो ये हमें कुछ बनाना था जी, या टीचर या डॉक्टरिंग कोई चीज़ हम बनाना चाहता था, लेकिन होना मुश्किल है। नहीं अच्छा लगता है और हमें कुछ नहीं मिलता ना, पढ़े हमारे पास नहीं है और हम क्या करेगा। आपके कितने बच्चे हैं? हमारा और मर्द और औरत दोनों मिलकर 10 है। Mullah said me, I have no boys, only the daughters. You bring me 100 wife, then know these boys. If you are married with the only one wife, not boy, you doing more one with the wife in the marriage, then you know the more one. जब अल्लाह देता हो तो ये बच्चे किधर फेंकेगा, ये पढ़ना चाहिए है ना, इनको कहाँ छोड़ेगा फिर, कोई वो नहीं है ना, इसको कम करना देना अल्लाह का काम है, हमें क्या करेंगे, हम इनको किस तरह कंट्रोल करेंगे।
Some mullah says you know, and different mullah, high, you know, high level, good mullah. He's saying it in the tablet, not using condom. It is all mullah saying not use the condom. Tadi akhir putih je. Jangan. No. See? No. No picture with the women. हम भी माजूर है और हमारा बीवी भी माजूर है, इसलिए सिर्फ ये अकेले है और कोई भी नहीं है। सिर्फ ये बड़ा बैठे कमाई करते हैं, अंग्रेज के साथ जाते हैं, ऑटो करते हैं और पैसा लाकर हमें गुजारा करते हैं। क्या बनोगे बड़े? सौ पढ़ाई या कोई इंजीनियर टीचर कोई बनते हैं ना, फौज में बढ़ते हैं। अभी स्कूल में छुट्टी हो रहा है ना, इसलिए बाप बूढ़ा है, इसलिए स्कूल में खर्चे वर्चे नहीं होते तो छुट्टियों में इधर आते। फोटो नहीं बने सर, बात अजाब होते हैं ना, ये मुश्किल होता है। What's the temperature at K2 base camp? क्या टेम्परेचर पता नहीं है सर, क्या चीज़ है पता नहीं है सर, अनपढ़ है। चलिए 6 दफा किए हैं। सब समझ आ गया जी आया जवान जो है ना, आप 10 साल हमारे साथ बैठे रहो तो तब भी मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। बंदे अभी हमारा यहाँ केटू में 18 साल हो रहा है सर, हम यहाँ आते हैं। एक महीना हर साल में 2 दफा 3 दफा 1 दफा, थोड़ा बहुत इंग्लिश का एक लफ्ज भी नहीं है। देखो बस पहली बार आए हम, फट रहे हैं कसम से, इतना दूर से आए, अभी भी कह रहे इससे भी दूर है। चले Eu sou pequena e tenho a perna curta, então aconteceu várias vezes que a gente ia pular as crevasses e eu precisava de uma ajuda e algumas eu dei uma titubeada. Eu falei, ah, aqui eu não vou.
खुद तुम सत्तू खा रहे हैं, हमें बिस्किट खिलाता है। आप ये इस्तेमाल करेंगे ना, आपको फौरन पेचिश होना शुरू होता है क्योंकि आदत नहीं है ना, आप लोगों को आदत नहीं है। Todo mundo sofrer aqui, né? Você chega lá no K2 ainda, né? Ah, com certeza. Eu vou chegar, vou plantar uma bananeira. I'm gonna do a headstand, on my knees, kiss, and come back. जैसे टेबल बहुत मजा आया ना, मच्छर को भी मजा आया, हम लोग को भी मजा आया। So things aggravate each other. So if you get a cold or you have a stomach problem, everything feels worse in altitude. तो ठीक कैसे होते हो? बस कभी ऊपर से नीचे आया तो कभी ठीक होता है, कभी ये ठंडा पानी पीने की वजह से ठीक होता है, कभी दवाई खा कर ठीक होता है। This is for just for ass. कितना हो गया? टाइम 1 होने वाला है। हाँ, हमारा 18 साल से हम लोगों ने सर्विस किया है। पार्टनर जान को खतरे में डालते हैं। आसमान खराब हो गया तो इधर पत्थर आते हैं, नालों में पानी आते हैं, सैलाब, कपड़े गीला होते हैं, रोटी नहीं मिलते हैं। दफा करो सर पोर्टर, मैंने तो इसके साथ तौबा किया। ये गधे है ना, गधा और हमारा ओहदा बराबर हो गया अभी। It's very important to organize the porters well, and they need association. अच्छा, पोर्टर सारे मिलकर, पोर्टर सारे किस तरह मिलेंगे? इत्तेफाक नहीं है ना आवाम के अंदर, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इत्तेफाक नहीं है, वरना तो कुछ हो सकता है सर। Sometimes they really treat the people not very kind. In the middle of the trek, they make a demand and they strike and they blackmail the people and they just stop doing trekking. And as you know, it's very difficult. गान मारवाने के लिए हम इधर थोड़ी आए हैं, ठीक है? क्यों जी? सही बात है। हाँ ना, पैसा ले लो ना, 100 केजी उठाओ, 100 केजी का पैसा ले लो। पैसे के पीछे भी इधर आया है। ले ले यार, नहीं ले। प्लास्टिक के ले गए। हाँ। ये वाला। नहीं ना के ले गए। I cannot accept that porters suffer on this mountain. If you can see them, they are with light shoes on this high altitude on 5,000 meters. They slept only covered with some nylons.
I cannot accept their destiny. I'm ashamed but watch them directly in their eyes. We can do nothing except to propose something about to increase our cost of expedition and some part of this money to go for them. We need to educate the locals, the expeditions, the trekkers, you know, they are coming with a lot of things and when they are back, so they don't take care of the environment. It's good for health to be clean. It takes some time to do this. कल परसों करेगा केटू चढ़ना चाहते हो? बिल्कुल सर, जाना तो था सर मगर मेरे पास कोई सामान नहीं है। मसला ये है सर, न रस्सी है न क्रिम्पोन है। अच्छा, तो आपका शौक है, आपने हाई पोर्टर बनना है? हाँ जी। फिर उसके बाद मार गया तो ठीक है। Sherpas that are brought in from Nepal and bring in a level of experience that often you cannot find in Pakistan in the numbers that are needed. With this year, we were talking that perhaps there's 100 total people that are attempting to climb the mountain, and that includes high altitude porters, Sherpas, and Westerners. This is the first time I came here, and this is my first climb in Pakistan. I hope successfully we did K2 this time. First Sherpa fixing everything and Sherpa looking weather, everything. Then Sherpa say, okay, go summit. Then clients follow for Sherpa. I'm very thankful for them because for me, if no like them to help us, maybe cannot to summit. Then Pakistan government, they stopped Nebel Sherpa to come to India in Pakistan because Nebel Sherpa was so good. They had all the opportunities being trained by Slovenians and Austrians and French and Americans. Everyone is going and teaching them in Nepal. बाहर से मेंबर आते हैं, उनसे ज़्यादा खतरे जगहों पे हम लोग फिरते सर, रस्सियों पे। वो लोग ट्रेनिंग शुदा होते हैं, हम हमारे लिए बगैर ट्रेनिंग का हम फिरते हैं सर। Nebel Sherpa pay equal amount of money that the foreign climbers pay, then they can climb. K2 is around $1,200 and average is now is $11,000. That the Sherpa go with oxygen and Pakistani without. ऑक्सीजन के बगैर समिट करना मैं कहता हूँ कि वही समिट है और ऑक्सीजन जो है वो बड़ा इजी चीज़ है।
Pakistani mountaineers, Pakistani climbers, because they are really, really strong mountaineers, climbers, maybe better than some European or American or Western people climbers. Pakistani climbers were very strong? Yeah, they, like compared to before, now it's more getting better. Yeah. और ऐसे लेके गया कल जो वही 200 मीटर से पूरा केटू पे जितना किलोमीटर है सब कम पर रहा. Thankfully, the Pakistan team and the Greeks came here early and they set up lines up to Camp 1, Camp 2 and even 3, which allowed us to catch up. So they did a great job at the early stages. And it paved the way for the successes in the last few days. खाओ ले थोड़ा सा खाओ रोटी अच्छा होता है खाया खाया बहुत देर होते ना उधर से स्टोव भी नहीं है इधर चाय बनाने के लिए ठीक है क्या चल रहा है हाई पोर्टर से क्या करना है सर रिस्क है सर टोटली 100% रिस्क है सर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्लाइंबर अगर ये सोच किया तो वो क्लाइंबर ही नहीं बनते या बहादुर है या तो बेवकूफ़ है इस दोनों में से एक तो है एक्सीडेंट होना और जो मरना हाइट लगना वो अचानक होते जाते हैं लेकिन वो जहन में रखा तो जो हम क्लेम ही नहीं कर सकते केटू बादशाह पहाड़ है तो आप केटू के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं Be without oxygen, maybe risk for brain. Because if you sleep at that altitude, blood circulation is slow, but while you are sleeping, you never then wake up again. A lot of people have died because of that. एक पावन हम लोगों ने लेके आया कि जो उधर जो मेमोरियल पे दफना है वो दूसरा डेड बॉडी नहीं उठाई इटालियन एक उस्ताद है हमारा लोंगो साहब तो उसने हमें अच्छा खासा ट्रेनिंग दिया था सर Everybody in the world said K2 is K2, it's something different and it was absolutely right.
I met these guys last year. They are very, very strong, I will say. But they need absolutely more technical skills, especially if you work with international people, you know, people coming from everywhere from the world. Yeah, this is the summit of K2. Pakistani and Italian flags, small ones. This year is a pivotal year. In 1954, you had the Italians were the first ones to summit K2, supported by the Pakistanis. When Italians 60 years ago came and took that mountain, and now this is the time to give back that mountain to Pakistani people. So I carry to low porters. Then coming in high porters. Then we are now in start the climbers. जो 60 साल सालगिरह है उसके लिए सिलेक्ट हुए थे और EVK2CNR मिस्टर अगस्तिनो जो बेस कैंप में है उसका मेहरबानी है हमारे ऊपर कि उसने हमें एक्सपीडिशन के लिए टोटली सब कुछ उसने बर्दाश्त किया. I am Agostino da Pollenza. I'm Italian. I'm 58 years old. It's my mountain. No, this is a Pakistani mountain, but it's sure is in my heart. This time, it's not my expedition. This time I help one Pakistani expedition because it's time for the Pakistani climber to climb K2. This year, you had 8 Pakistanis supported by 2 Italians, and they made it to the summit. This is a original Life magazine from 1954, so it's 60 years old, and so I'm here and I'm excited to have not only success, but to be part of the Diamond Jubilee. कौन है कोई पता नहीं है भूल गया ना इस आदमी में चलो ले चलो My really passion for these guys from Pakistan. Then they start from low porter to become high porter, and now they are really a mountain guide. Hello. Hello. Exactly now, yeah, nice. Pakistani member arrived on the top right 5 minutes ago. Yes, Munir, how are you? Summit. I give you Agostino. Siamo in cima! Siamo in cima! मैं आपको क्या कहता हूँ कि मैं थोड़ा खुशी की मारे थोड़ा मैं बोल नहीं सकता हूँ तो क्योंकि K2 की जो ख्वाब होता है इंसान को वो आज हमें पूरा हो गया तो इसलिए मैं बोलने का वो थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ
हम अपना जान हथेली में रख के जाते हैं कि मुल्क और कौम का नाम रोशन करने के। तो मैंने 2007 में जो है ब्लोपिक जो किया, विंटर में मैंने नंगा पर्वत किया, K2 मैंने किया। अल्लाह को ये K2 का टॉप है 2004 में, ये माउंट एवरेस्ट का टॉप है। मुझे भी पहाड़ों पे चढ़ना पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब मेरा वालिद साहब ने पाकिस्तान के अंदर 5 पीक समिट किया तो मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान अब मेरे वालिद साहब को बहुत हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन हौसला अफजाई न करने की सूरत में मेरा दिल भी टूट चुका। तो एक सूखा एक मेडल दे के जो है हमने हसन सत्तारे को मेडल दिया है, वो मेडल हमने चढ़ना नहीं है। आपके अब्बू जब जाते हैं क्लाइंब करने आपको अच्छा लगता है? नो, बहुत ऊंचाई है ना, बहुत पहाड़ें, बहुत ऊंचाई भी है और ख़तरनाक भी है, हाइट भी बहुत लंबी है। I call myself and all the mountaineers quite selfish because we do not seem to realize how our families, if we have kids and friends and everybody else suffers after we go. We try to convince him, but he always said we are ready to die for our country. बदकिस्मती ये है कि हमारा कंट्री इस टूरिज्म की तरफ जो है कोई तवज्जो नहीं है। बम ब्लास्ट की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से टूरिज्म ना होने के बराबर है। Mas para chegar lá eu já notei que isso não é só turismo, é uma experiência que você vai passar, é conhecer um Paquistão que nenhum brasileiro conhece. Gango kezere kol ngalangir gango stor baston bese kershapo baston bese kershapo Gango kezere kol ngalangir gango stor baston bese kershapo baston bese kershapo Allahu Akbar! Nare Risalat! Ya Rasulullah! Nare Haidari! No último trek que eu fiz, que durou umas 8 horas, eu senti muita fraqueza e quase caí 2 vezes. E a disposição de um dos porters que estava carregando 50 quilos nas costas de me ajudar, de querer levar minha mochila, me fez assim enxergar esse povo com outros olhos, enfim. आपने देखा ना ये पोर्टर हजरात इतना बोझ उठा के, मैं तो अपना बैग उठा के नहीं चल सकता। The porters have superhuman strength and they carry the load. They don't complain like us and they just move on.
if you talk about Pakistan in popular media, there's obviously a lot of reports of the risk, but on the ground, on an individual basis, Pakistanis are incredibly friendly, super welcoming, and I think that has been, I think, one of the biggest surprises for me coming to Pakistan. Mountaineers and trekkers found that Pakistan has magnificent and amazing potential mountain adventure, trekking adventure, and historical site views. Things can happen, bad things can happen to people everywhere in the world, and this must not discourage us from coming back to Pakistan. Madalo nasha inipa ngadang barhabyo pace dunula bianga suru suru mashe siangla biangi noji sesere dope Sita na penjika kaburu pohofcha senga byungono इंसान को मौत का पता नहीं भी है, सर्दी भी है और रास्ता भी ख़राब है।